You're watching Roll Info for You. साइकोथेरेपी के हवाले से डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मादी की एक झलक कि जहनी अमराज के मुतालिक आगाही और जहनी मरीजों को इलाज के लिए अगर बाकायदा इदारों में तकरीबन 1500 ईस्वी के करीब दाखिल कराने का सिलसिला शुरू हुआ. Philip Pinel becomes famous for demanding that mentally be treated with kindness, personally unlocking the chain of inmates in France. तो उसने बाकायदा जहनी मरीजों को जंजीरों से आज़ाद कराने की कोशिश की. जैसे कि पहले भी बात हुई, साइकोथेरेपी फॉर द मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन प्रॉब्लम टॉक्स विद अ साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल. और थेरेपीज की अगर हम किस्मों की बात करें तो पहली है इनसाइट थेरेपीज इन विच द मेन गोल इज टू हेल्पिंग पीपल टू गेन इनसाइट with respect to their behavior, thoughts or feelings. जो एक्शन थेरेपीज होती हैं in which the main goal is to change disorder or inappropriate behavior directly. और तीसरी इसकी किस्म है that is biomedical therapy, therapy for mental disorder in which a person with a problem is treated with biological or medical method to relieve symptoms. यानी कि अद्वियात का Behavioral therapy and classical conditioning also part of your syllabus. Behavioral therapies, actions therapies based on the principles of classical and operant conditioning and aimed at changing disorder behavior without concern for the original causes of such behavior, means they focus on current behavior. Behavior modification, another technique used in it, or applied behavior analysis, use of learning techniques to modify or change undesirable behavior and increase desirable behavior. Another technique called systematic desensitization, behavioral technique used to treat phobias, in which a client is asked to make a list of ordered fears and taught to relax while concentrating on those fears. काउंटर कंडीशनिंग इसमें वाकई होती है दैट इज रिप्लेसिंग एन ओल्ड कंडीशन रिस्पॉन्स विद अ न्यू वन. काउंटर कंडीशनिंग इसमें वाकई हो सकती है दैट इज रिप्लेसिंग एन ओल्ड कंडीशनिंग रिस्पॉन्स विद अ न्यू वन बाय चेंजिंग द अनकंडीशन स्टिमुलस. बिहेवियर थेरेपी की एक और टेक्निक Behavior therapy की एक और टेक्निक aversion therapy है that is form of behavioral therapy in which an undesirable behavior is paired with an aversive stimulus to reduce the frequency of behavior. Another technique that's exposure therapy, behavioral techniques that introduce the client to situation under carefully controlled conditions that are related to their anxieties or fears. और इसमें सब टेक्निक्स हैं. नंबर एक फ्लडिंग है, टेक्निक फॉर ट्रीटिंग फोबियाज एंड अदर स्ट्रेस डिसऑर्डर इन विच द पर्सन इज रैपिडली एंड इंटेंसली एक्सपोज टू द फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन और ऑब्जेक्ट and prevented from making the usual evidence or escapes response. Eye movement desensitization reprocessing EMDR, controversial therapy for the post-traumatic stress disorder and similar anxiety problems in which the client is directed to move the eye rapidly back and forth while thinking for a disturbing memory. That also needs more controlled studies as well. मतलब इन पे अभी काम जारी है. Another successful technique of behavioral therapy is modeling, learning through the observation and imitation of others. A participants modeling technique in which a model demonstrates the desired behavior in a step-by-step gradual process while the client is encouraged to imitate the model. क्लाइंट को कहा जाता है कि आप इस रोल मॉडल को कॉपी करें. बिहेवियर थेरेपीज में रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा फोकस्ड है. रीइंफोर्समेंट के तो ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन कराई जाती है या चेंज लाई जाती है. दैट्स वाई द स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए रिस्पॉन्स बाई फॉर्मिंग इट विद प्लायरेबल consequences और द रिमूवल ऑफ एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस. और रीइंफोर्समेंट के लिए एक टोकन इकोनॉमी का मेथड इस्तेमाल किया जाता है दैट द यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड टोकन to reinforce behavior in which the tokens can be accumulated and exchanged for desired items or privileges. टोकन दे के नेक्स्ट आपकी प्लायरेबल बिहेवियर को
देखा जा सकता है या चेंज लाई जा सकती है। Contingency contract, a formal written agreement between the therapist and the client or teacher and a student, in which goals for behavioral change, reinforcement and penalties are clearly stated. Basically, ये contingency contract is a written agreement between आप ये हैं, ये आपसे डिमांड की जाएगी और ये आप फुलफिल करके दिखाएंगे। वो स्टूडेंट टीचर के दरमियान भी हो सकता है, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान भी। दैट इज़ बेसिकली लर्निंग प्रोसेस और अच्छी लर्निंग का तरीकाकार है। बेhavioral थेरेपीज में एक्सटिंक्शन की एक टेक्निक है, दैट इज़ रिमूवल। बेसिकली एक उस फेज में से फेज आउट होना अच्छे तरीके से। द रिमूवल ऑफ ए रिइंफोर्सर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बिहेवियर, in which time out, an extinction process in which a person, usually a child, is removed from the situation that provides reinforcement for undesirable behavior, usually by being placed in a quiet corner or a room away from possible attention and reinforcement opportunities. Behavioral therapy के हवाले से कुछ और information, that behavioral therapies can be effective in treating specific problems such as bedwetting, drug addictions and phobias, or behavior therapies can also help improve some of the more troubling behavioral symptoms associated with more severe disorders.